So namaste सभी को. Good evening. It's 4th of June 2026. Time is 5:03. और हमारे साथ आज है शोभा मैम. Very popular and of course सबकी चाहती है. We all know her. कौन शोभा मैम से पहले नहीं मिला है? Please raise your hand. कितने लोग शोभा मैम से नहीं मिले हैं अभी तक? Oh, no one. Okay. Okay, Rita. Yes, Rita. So, Rita के अलावा बाकी सब हम लोग मिल चुके हैं. तो without much ado, let's start. Shobha ma'am, the floor is all yours. It's all your journey about ACP, in VIVA and RKM. जो कुछ भी आप बताना चाहे, the floor is all yours. जो कोई भी hand raise करेगा, and you can also put your comments there in the chat box. बीच-बीच में break लेते हम लोग वो भी लेते रहेंगे. ठीक है, Shobha ma'am? So all yours. एंड हम लोग प्रणाम मंत्र करेंगे. आप ही करेंगे मैं प्रणाम मंत्र या मैं करूं? आप कर लीजिए. ठीक है. लेट्स डू द प्रणाम मंत्र एवरीवन. ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्ये सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ओम तत्सत्. ओम शांति शांति शांति. Over to you, ma'am. Okay. Thanks. And Arnab, I think, I don't know, is it a tough subject to talk about oneself? I'm not sure. What do you think? For me, it is. What do you think? You're asking me is it easy? specifically? Anybody else? Yeah, Arnab, what do you think? Is it easy to talk about oneself? In the mind it is very easy, but to the public might be difficult. That's very difficult. Yes. So it's a tricky subject. So my journey in ACP has been very important, a very important phase in my life, and I wish I had, like they say, you should never put the cart before the horse. घोड़ा तो पीछे नहीं होता ना, घोड़ा सामने होना चाहिए. So मैंने ACP I'm doing right at the end of my life. So I feel I put the cart before my horse. ये पहले आना चाहिए था in my yes. बहुत दूर बोला ना तो कितना दूर? क्या सपना सुनाई नहीं दिया दिन. I'm sorry, my mistake. You were talking to me or to yourself? Okay. Ma'am, by mistake, not for you, ma'am, myself. Sorry. Okay. So that's what I wish it had come before this whole ACP thing, because you change as a person. So what are the things? How do we change as a person in when we start on our ACP journey? We actually I feel we pick up things according to our own nature, or according to ये वो practice आपको याद है ideal का, developing towards one's ideal, मतलब अपने आदर्श पे develop करना. वैसे है, either you have an adarsh and you develop towards it, or you your own nature. You pick up things from ACP depending on your nature or depending on something you really value, some ideal that you have. In my case, I think it's been a long, it's been my sanskaras that made me choose things from ACP. And very important. So similarly, and very subconsciously, when I first came to ACP, I started developing things subconsciously. Do you understand what I mean when I say subconsciously? It's very different from unconsciously. It's subconscious में क्या होता है? Yes, Rita. Did you raise your hand? No. Okay, not Rita. Somebody R. Who's raised? Shobha ji, Roshan. Roshan. हाँ, बोलिए Roshan.
शोभा जी माफ करिए, मैं अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली तो थोड़ा देखिए उसके बारे में टिप्पणी, मेरा एक सवाल भी है आपसे, ठीक है? तो अनकॉन्शियसली मुझे लगता है कि अनजाने में, और सबकॉन्शियसली मतलब हमारे अंदर से गहराई से आता है। अच्छा कृपया मेरा सवाल शोभा जी, हाँ क्वेश्चन। बताइए। देखिए एसीपी हमारा पहला प्रोग्राम था रामकृष्ण मिशन का, और आप जब एसीपी बोलते हैं तो पहले ज्यादातर लोग एसीपी से जानते हैं हमारे प्रोग्राम को, पुराने मेंबर्स को एसीपी, क्योंकि उस समय एक ही प्रोग्राम था। अभी 5-6 प्रोग्राम है। तो हमारा सवाल ये है, एसीपी मतलब एग्जैक्टली क्या आप कहना चाहेंगे? क्या सिर्फ ट्रेनिंग जो हमारा मटेरियल कंटेंट है वो ही, या फिर हमारा रामकृष्ण मिशन दिल्ली और गुरुग्राम कहना चाहेंगे, या हमारी कंपनी जो है, जो विवा अभी बनी है, वो भी उसमें आती? कृपया थोड़ा इसके बारे में टिप्पणी कर दें। सब कुछ, एंड यू नो ये सब मिलके कैसे, हाउ इट वर्क्स ऑन यू, मुझे बहुत देर, इट इज आफ्टर सम टाइम दैट यू आई अंडरस्टूड इट। तो जैसे हम जब पहले पहले हम आ रहे हैं रामकृष्ण मिशन में, आई डोंट नो रोशन आपके साथ शायद अलग होगा, तो बट इट इज स्वामी विवेकानंदा हु ड्रॉज अस इनटू रामकृष्ण मिशन। और उसके बाद वी स्टार्ट डेवलपिंग श्रद्धा एंड लव फॉर ठाकुर एंड माँ। वैसे ही एसीपी का, देयर वर सम थिंग्स इन एसीपी, और सबसे ज्यादा व्हाट आई थॉट, सबकॉन्शियसली ही ये सब चल रहा था। उसका जो कंटेंट था उसका नॉट वो कैसे एक्शन लेना है, हाउ यू एंड अप टेकिंग, वो नहीं। एसीपी जब द थॉट प्रोसेस, कैसे कैसे हमारा सोच बदल रहे थे, दैट्स व्हाट आई वाज रियली। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं पहली बार देख रही थी वो हेरोइक, बीइंग हेरोइक वो वाला, और उसमें कृपा वाला वो एग्जाम्पल में बीइंग हेरोइक, बीइंग करेजियस में मेंटल करेज, फिजिकल करेज, मॉरल करेज, ऐसी हर चीज को जिस तरह कैटेगराइज किया है नीटली, सो नीटली। हम जैसे लोग जो बाहर से आए हैं स्पिरिचुअलिटी में फर्स्ट टाइम, इतना इट हैज हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज देने से हमें समझ में नहीं आता था, बट बिकॉज इट वाज कैटेगराइज्ड इन सच अ वे, मैंने सोचा वाह, ये दिस इज सच अ ग्रेट वे ऑफ थिंकिंग, it is, it makes things so easy, so clear, and it's so easy to think. तो दिस ऑल दिस लेकिन सबकॉन्शियसली चल रहा था। क्यों सबकॉन्शियसली मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एज आई सेड हमारे नेचर में है, हम जो चीज हम सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं उसी को हम, वही हमको आकर्षित करते हैं। तो मैं 30 साल जर्नलिज्म में थी, मेरा संस्कार पूरा जर्नलिज्म से आया था। और जर्नलिज्म में क्या, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैंने यहाँ आके, एक्चुअली एसीपी में आके मैंने देखा कैसे मेथोडिकली सोच सकते हैं सब कुछ ना। यू कैन you can cut things into different areas, you can actually put things into different brackets, categories, and do your thinking. It's quite amazing. I mean, when I first saw the content, I remember I was sitting with Vanjira. She gave me her laptop and she said, you just, first day, she said, you go through the content. And I was quite amazed. I said, yeah. Or another thing was, when I was in journalism at that time, I had plateaued, मुझे और कुछ, मुझे नहीं लगा और कुछ सीखने का था। इंटरनेट में सब कुछ, पहले जब जर्नलिज्म में आते हो, यू आर गेटिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। कुछ बड़ी घटना हुई तो you're in the newsroom, it's coming first to you, you're part of all that. वो by the time I was 54 at that time, वो एक्साइटमेंट चला जाता है। you're doing the, after point you're doing the same things every day. I realized that वो learning curve में जो है, I had, there was no learning
nothing new to learn really, because जो भी learn करना है वो next से learning हो सकता है. Every information, in fact there was an overabundance of information. Information बहुत ही ज्यादा मिल रहा था, जरूरत से ज्यादा. लेकिन जब मैं यहाँ आई एसीपी में, आई रियलाइज दिस इज समथिंग न्यू टू लर्न. यहाँ पे ये values and all are not something that are discussed. हम डिस्कस करते हैं in the sense corruption and all that, what is good for society, लेकिन personal transformations ये सब हम उतना नहीं सोचते हैं. We talk about individual heroic deeds, ये सब, but there's very little कैसे वो हीरो बनते हैं. हमने हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में भी देखा है, वी डिस्कस हीरोज, बट हम कैसे डिस्कस करते हैं, उनके बर्थडे क्या है, वो कब, व्हेन डिड ही डाई, व्हाट डिड ही डू, ऐसे कुछ डेट्स होते हैं. बट वो भी आप देखो एसीपी में ही आपको बताता है कि ये हीरो बना कैसे, हाउ डिड ही बिकम दिस पर्सन. So all of this, I thought this is where I can really learn something new, and I can tell you that I was not wrong at all. This part of my journey, my learning increased so much. I became a different person in many different ways. Not only, in the way of understanding values, but also intellectually. My understanding of things, critical thinking, all of that, how, how to do the thing. And even now, when I can talk, when I talk to people about any subject, I can do it with so much confidence. I can, I can ask the right questions. I don't believe things just because somebody said so. Yes, everything has come from asking the right question. Sometimes it's not easy, but if you see, इसमें ना हमें, मुझे लगता है कि एसीपी, आप लोग अभी the newcomers are not really doing ACP, आप लोग FCP कर रहे हैं. लेकिन हम जब ACP कर रहे थे, हमारे ACP का जो गाइड्स था ना, especially year 2 का जो था, वहां पे the way they used to ask the questions, इतना deepening questions. Why is he thinking like this? Is he really, is he true? Is it true that what he's thinking, or is it some kind of fear? ये सब ना सोचने का हमें बहुत मौका मिलता है. So I can also tell you कि यहाँ पे बहुत सारे advantages थे. Objective analysis and evaluation तो होता ही रहता है because of this. It really improved. ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे में भी प्रेजुडिसेस थे, बहुत प्रेजुडिसेस थे. और यहाँ आश्रम में, यहाँ पे रोशन मैं कहूंगी कि आश्रम में आके ही मेरे जितने प्रेजुडिसेस थे, आई मेट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट प्रोसेसेस, so many different kinds of behaviors, type of people, all everything. यहाँ पे I can say my prejudices about people, even situations, everything, just prejudices. वो I could, work on that, or थोड़ा objective analysis. It's not easy. I still admit I may have certain prejudices still, but at least I know what those prejudices are, and I can be. तो मुझे in the state I'm in now, मुझे पता है, हो सकता है जब मेरा जब कोई रिएक्शन आता है, मुझे ये पता होता है कि ये एक प्रेजुडिस रिएक्शन है और मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए. तो ये सब, ये आई से ये सिर्फ एसीपी के वजह से ये सब हो सकता है. नहीं तो after you've seen in the media, prejudices, तो मीडिया तो बहुत ही biased होता है, prejudiced होता है, and it is allowed. हम सिद्धार्थ से.
शोभा मैम Yes, थोड़ा Tapan, बॉस did you want to say? अर्नब ने हैंड रेस किया और बाकी सभी मेंबर्स को बोलूंगा, स्पेशली न्यू मेंबर्स को, प्लीज अपने अपने ना शॉर्ट क्वेश्चंस को रेडी रखें, ठीक है? यस अर्नब. Hello, Shobha ma'am. Hello, So, Arnav. this value of openness to learning. See, as you said, Vivekananda pulled you in to this Yes. Matan mission. Mera And it's case this mein- critical thinking, you know, the content and the critical, the way, the thought process, the way, the process of thinking, that is what pulled me to ACP. Yeah. What I was saying is, when you reached a plateau in your life, the value of openness to learning. See, Ram Thakur bolte the, as long as I live, so long do I learn. Ye, for me, I had heard, listened, discussed through various forums before ACP. For myself, I'm saying. But I see the same reflection in you, that this value of openness to learning, this ACP actually helped you discover, right? Till at the age of 54 or 45, what you're saying, your journey in journalism, you had Do you think, Arnab, do you think it was that, or do you think it was openness of learning was already there, which is why I was able to switch, make such a, such a leap of faith, you can say, and go into a completely new territory to learn something new? Wouldn't you say that? And here I discover a huge gold mine or diamond mine or whatever. so that huge leap of faith is something you have got, is what you're saying. Openness was there, but in a very unstructured way, unrealized way. Yes, It was habitual, exactly. it was character, Unstructured. but this was more organized and more away, what you call focused, conscious Exactly, you decision. know, you raised something that's very right. It was all unstructured. मतलब जो हमारा प्रोग्राम कहना चाहता है हमारे में है, लेकिन सब you know थोड़ा unstructured है, इधर है उधर है, everything floating around. But when we come to ACP, you know, we realize and we can give it a sharper direction. So thank you. I just realized something from this small conversation. It is there, but it got structured and we became aware. Thank you. And I also realized it from, you know, I got a sharper idea. I think Geeta's raised her hand. Yes, she has, ma'am. Yes, yes. थैंक यू सो मच शोभा मैम. तो यहाँ पे शोभा जी मैंने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखा, लेकिन मुझे शांति नहीं पड़ी. मैंने सोचा मैं आपको डायरेक्टली ही पूछ लूं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है. नहीं दे सकती. हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे देख पाएंगे. हाँ, मेरा मकसद और मेरा एम एक ही है. यहाँ पर हमारे इंटरनल ट्रेनर बैठे हैं, तो जो इंटरनल ट्रेनिंग अरेंज करते हैं अर्नब जी एंड अदर्स उनके टीम में. तो मेरा ये कहना है शोभा मैम, देखिए आपने जो बात बताई है, मैं इतना वननेस फील कर रही हूँ आपके साथ आज की तारीख में. जब वो आप बोल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात बता रही हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म में. बात ये है कि एसीपी के ट्रेनिंग में और हमारे कंटेंट में इतना गहरा गोल्ड माइन छुपा है, जैसे आपका ही वर्ड मैं यूज कर रही हूँ. तो मेरा ये सवाल है यहाँ पर, तो क्यों ना हमारे जो न्यू कमर्स है, जिस तरह से हमें ग्रिल किया गया, हमें ट्रेनिंग दी गई है, तो क्यों ना हम उन्हें भी ये ट्रेनिंग के दौरान ले जाएं. देखिए हम एफसीपी रन करते हैं, अग्री करती हूँ, लेकिन एफसीपी है क्या? एसीपी ही है ना. अगर आप एफसीपी में बहुत जल्दी से ये कार्यक्रम आप ओके फिनिश कर देते हैं, लेकिन अगर आप एसीपी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 जब तक इसके दौरान नहीं ले जाया जाएगा, तब तक मुझे लगता है शोभा मैम कि ये तैयारी अधूरी है और हम नाइंसाफी करेंगे हमारे आने वाले जनरेशन के साथ. मतलब जो ट्रेनर्स होंगे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे, in order to engage and deep thinking and transformation to come, I think this is the required that each one of us who are not trained with a year 1, year 2, year 3, the organizers here of internal trainers, my question to you is, what are you going to do about it? Kindly think about it, reflect on it and take action. Thank you so much.
Okay, that's a valuable input. So, जैसे cognitive objective analysis, फिर लॉजिकल थिंकिंग और एविडेंस बेस्ड जो हम ट्रूथ सीकिंग कहते हैं, ऑल दैट डेवलप एंड उस यू नो दीज थिंग्स help me make. Thank you, Geeta, thank you. It's a very valuable, but it is beyond my scope to add to this, because policy decisions मैं नहीं लेती. We have our training lead here. We have, and then of course there's Swami Shantatmanandaji Maharaj, who is the last word. So Geeta, you could call him up also. अन्नप और सुचिरमा ने भी हैंड रेस किया, और एक साथ में शशि सर का क्वेश्चन. शशि सर, एक बार आप खुद ही पढ़ दीजिए या फिर बोल दीजिए, हम में से कोई ना कोई आंसर कर देगा. अनम्यूट प्लीज. हाँ, मेरा सवाल है मैडम, जब हमारे विचार स्वतः व्यवहार में परिवर्तित होने लगे, क्या उसे ही अवचेतन मन कहते हैं? मतलब अनकॉन्शियस माइंड. हाँ, अनकॉन्शियस माइंड किसे अनकॉन्शियस ना, जो रोशन बहुत ठीक से जो बताया, हम ना हमको पता नहीं चलता. एब्सेंट माइंडेडली हम, जैसे मैंने सोचा नहीं लेकिन मैंने ये कप ले लिया, नॉट बिकॉज आई वांट टू, ऐसे ही कुछ कर लिया. या नींद में जब हम रहते हैं, हम अनकॉन्शियस ही रहते हैं, वो है अनकॉन्शियस. लेकिन सबकॉन्शियस जो है ना, वेरी गुड क्वेश्चन. मुझे थोड़ी देर लेकर वो एक्सप्लेन करना चाहिए था, क्योंकि हम जब एसीपी में आते हैं हमको पता नहीं चलते हैं. जैसे अर्नब, ये सब हमारे अंदर रहते हैं और यू नो फ्लोटिंग अराउंड विद इन अस, और हम उसको कैसे हम यू नो व्हेन वी कम टू एसीपी वी स्टार्ट पिकिंग थिंग्स अप. तो ये हमारे सबकॉन्शियस मतलब ये वो माइंड है. it's there inside us, but it's not there in the sense that you know there is we do something not consciously, but we do it out of a motivation. So I get drawn towards ACP, but inside me there is a motivation. There is my 30 years of sanskar and training. I have given a lot of value to critical thinking and analyzing in the right. वो संस्कार है, that is what I value a lot. तो वो संस्कार के वजह से वो मेरे अंदर में है, लेकिन मैं जब ACP चूज कर रही हूँ मुझे वो सब पता नहीं चलता है, लेकिन मैं वो सब अब्सॉर्ब कर रही हूँ ACP से. And that is what I absorb. But what I, if, acha, so I hope you're, because time is also short. Yeah, Yes, if you're satisfied with my answer, I'll go to the next. सुचिरमा, अन्नप है. अन्नप, अगर फॉलो अप करना है अभी कर लीजिए. सुचिरा मैम क्या है? नहीं, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है. मैं गीता जी का वो आंसर देना चाहती थी कि मैं ऑलवेज आई एनकरेज रिसोर्स पर्सन, न्यू कमर्स टू टेक द ओल्ड एफडीपी, माने हमारा जो बुक्स है, किट्स है ओल्ड वाला, मैं ऑलवेज एनकरेज प्लीज टेक ऑल दिस 3 बुक्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, एंड इफ यू वांट टू क्लियर एवरी, क्योंकि अभी एफसीपी का जो सीएफटी है बहुत कम, जस्ट ऐसे वर्क थ्रू करके चला गया, लेकिन हमारा जो पुराना जो सीएफटी है वो देख के ये लोग पढ़ाई करे तो मेरा लग रहा है और थोड़ा. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और ये ना अगर हम चाहते हैं तभी हम कर सकते हैं. यू कैन नॉट फोर्स पीपल टू यू नो गो थ्रू दोज. ये बिल्कुल नहीं होता कि यू फोर्स पीपल टू डू दोज, गो थ्रू दोज गाइडलाइंस. उनको अगर पढ़ना है तभी वो पढ़ेंगे. तो सुचिरा जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है कि yes, but as Geeta said, maybe we can show them that this is there is something really valuable in these books. वो भी हो सकता है. अन्नप, कुछ नहीं. अच्छा, कितना कुछ कमेंट्स?
Can I speak here? You know, I just want to add something. As Suchira said, वो किताबें हैं वहाँ पे. A lot of us, many of us actually, we used to go through those books several times. And there were some explorations which were our favorite. वो हम बार बार देखते थे, उसके questions पढ़ते थे. तो, you know, ऐसा हुआ था. Yes, गीता मैम. मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं अग्री करती हूँ आपके साथ, किसी को हम बोल देना कि ये पढ़ लेना, ओके, तो हो सकता है, मतलब पढ़े या ना पढ़े. तो जब अगर ट्रेनिंग का माध्यम होगा ना, शोभा मैम एंड सुचिरा जी, ट्रेनिंग का एक माध्यम होगा, तो देयर इज नो चॉइस, आई हैव टू अंडरगो दैट ट्रेनिंग, राइट? ओके, सो दैट वाज माय क्वेश्चन. एटलीस्ट हम दिखा सकते हैं कि कितना वैल्यूएबल है, वो देख सकते हैं, वो तो है, वो भी आई एग्री विद दैट. तो ये है, सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग था क्या मेरा, you know, protection against misinformation, sharpening one's problem solving, better decision, ये सब था क्या? Decision making, ये सभी था क्या? No, it actually leads to values. This is the way to values. And you know, the logical and critical thinking was the attraction, just like Swamiji was the attraction for coming to Ramakrishna Mission. Similarly, I feel all that critical thinking is a very important part of spirituality. If you want to do anything in depth, मुझे तो लगता है ये we have this process, no, Shravana, Manana, Vidhyasana. वो Manana part, this ACP, in my case, it really helped me with it. Whenever, you know, I can use my thinking. In my thinking, it's really helped me sharpen my thinking. What do you all agree with that? अन्नत के पास आते हैं, उसके बाद यंग लोगों से खास करके पूछना चाहेंगे, आप लोगों ने एसीपी का कंटेंट देखा है खोल के? टीम मेंबर्स, और अन्ना वो टू यू, पूछ रहे हैं आप कुछ, प्लीज कंटिन्यू. I was raising and putting my hand down because it might take little time. Shobha ji, can I take or should I do it in the end? I have the time. Okay. See, there is a belief by our head, Swami Shantatmananji, that we must migrate to FCP for various reasons. ACP is our flagship. Geeta ma'am, अगर मैं गीता का एक श्लोक उन 700 में से लेके अगर उसी को श्रवण करके मनन करता रहूं, आई थिंक बहुत ज्यादा डेप्थ और क्रिटिकल थिंकिंग आ ही सकती है. ये फिलोसॉफी स्वामी जी, शांतात्मन जी का ही अपना ही है कि अगर एक आइडिया मुझे इंस्पायर कर दे, आई थिंक माय वर्क इज डन, है ना. अब एसीपी का जो कंटेंट है 48 मॉड्यूल्स, हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करने जाएंगे, वो अगर हम फर्स्ट लेंगे तो भाई खत्म नहीं होगा. ये जो 16 मॉड्यूल्स को हम 4-5 महीने से धीरे धीरे हम जो ट्राई कर रहे हैं. गीता मैम, यू आर देयर ना? Am I audible? Yes, Arnabji, I am there. I am listening with great ears, extra ears. I am listening because see, I feel very seriously about. Let me say that. हाँ, yeah. No, you see, ACP को हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे अगर हम 48 को कराने जाए ना, हमें भगा भगा के करना पड़ेगा. आई थिंक वी ऑल एग्री. अगर मुझे एक नया रिसोर्स लेते हैं और उसको फील्ड पे भेजना है, एसीपी करे तो इट विल बी टू सुपरफिशियल. एफसीपी का चांस, कैन वी सिलेक्ट वन स्पेसिफिक टॉपिक? रुको, एसीपी का इसलिए हमने एफसीपी में जब कन्वर्ट किया है, 90% ऑफ आवर स्कूल्स आर रनिंग एफसीपी और अडॉप्टेड भी है. उसमें अगर हम सारे एक्सप्लोरेशन को धीरे धीरे करते करते जाए, जैसे अभी अप्रैल से हमने स्टार्ट किया है, बहुत सारे 7 ग्रुप्स बनाए हैं, वो क्रिटिकल एनालिसिस पे फोकस हो रहा है. अप्रैल से हमने लैंग्वेज के स्टार्ट किया है. हमने अभी इस हफ्ते से अवेकनिंग के भी 4 ग्रुप्स स्टार्ट कर दिए हैं. सपना जी है, शोभा जी है, राजी जी है और अमित है. तो वो हम धीरे धीरे रोल आउट कर रहे हैं. अब एसीपी भी थोड़े समय में आएगा. इट इज नॉट, उसके बाद नवजागरण भी लाएंगे हम.
सारा कुछ धीरे धीरे आएगा। बट जैसे गीता मैम का फर्स्ट था हमारे लीड अर्नब, सी मेरा शुरू से मानना था, दो आई एम द लीड, आई थिंक 1 महीना पहले भी कहा था, we can see that everybody is growing। कल सौरभ भी कह रहा था कि इतने लोगों को पकड़ के कराना, एक साल पहले इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल, अभी मैं आराम से चाय पी के कर रहा होता हूँ। इट्स हैपनिंग, देयर इज अ डेवलपमेंट। सो आपने अगर मुंह से कहा है एसीपी को भी हमें लेना चाहिए, गीता में मुझे लग रहा है थोड़ा और टाइम दीजिए, इट विल कम। आई थिंक दिस इज एंड बस इतना ही कह के विल। यस यस, ओवरनाइट तो नहीं होगा। थैंक यू सो मच। हम मैं तुम्हारी चैलेंजेस समझ रही हूँ अर्नब जी, और एक और बात कहना चाहती हूँ कि कैन वी फाइंड सम मिडिल पाथ? Can you think about it, how to, squeeze into so many activities? One exploration of that year 2, or as Shobha ma'am was mentioning, year 1 नहीं, year 2 का one exploration जो हम लोग part 1 और part 2 में करते हैं, being heroic से start से शुरू करो। तो आप देख रहे हैं कि हमारा श्रद्धा जो है, I think श्रद्धा, my better understanding of Shraddha came from year 2. What do you say? Well, anybody agree? Yes. I feel, Shobha ma'am, when you started and you said कि जब heroic से मुझे ये पता चला और मेरे में ये transformation आया, तो I was like taken away कि अरे एक ये heroic से आपका इतना transformation आ गया, तो हमारे जो newcomers है वो जब ये देखेंगे, वो जब चर्चा करवाएंगे आप लोग as a trainer और उनको reflection करवाएंगे, तो उनमें कितना बदलाव आएगा। So that is what, I thought, and it triggers me that कि मैं ये बात रखूं कि ऐसा होना चाहिए। Thank you so much, Shobha ma'am, and thank you, Arnab ji. I understood what are your challenges, and we are here to contribute and facilitate. Nothing, like that. Just reflect on that. तो शशि जी ने अभी जो सजेशन दिया, आई थिंक कीर्ति दादी वाला एग्जाम्पल, ऐसे हम 15-20 एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं। गीता जी, शोभा जी अगर हेल्प कर पाए, और भी जो भी है, हरिओम वगैरह, रामानंद जी, यू सजेस्ट 5-10 एग्जाम्पल्स, उसको हम बीच बीच में 1-1 घंटे का सेशन रख सकते हैं, 2-2, 3-3 एक्सप्लोरेशंस का। मेक सेंस? हाँ, ठीक है सौरभ। यस, हाँ सौरभ, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछ नहीं रहा था, मैं यही कह रहा था कि अगर हम एफसीपी को बहुत गहराई से देखें तो कंबाइन ही है एसीपी के 3 सालों का। तो अगर हम एफसीपी को भी बहुत गहराई से कर लेते हैं तो एसीपी भी धीरे धीरे हम कर ही लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मे बी सम मॉड्यूल्स आर मच डीपर इन एसीपी। वही कर रहा हूँ, वही स्टार्ट हुआ है, बट देन कुछ एग्जांपल्स जो नहीं है और वहाँ पे सच में बहुत अच्छे, उसको भी हम आई थिंक कर सकते। सौरभ जी, बात ये नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं एफसीपी और एसीपी को। बात ये है सर, आप देखिए इसको, हाँ मैं सभी को कह रही हूँ, इसमें डिबेट। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर, आप अगर, हाँ उनका जब आप नहीं, एक लास्ट बोलती हूँ, मैं लास्ट बोलना चाहूंगी। जब आप लिटरेचर उठाएंगे, जैसे सुचिरा मैम बोलती है मैं बुक्स देती हूँ उनको पढ़ने के लिए, यस वो गोल्ड माइन है, ओके, जो सुचिरा मैम बोलती है उनको करने के एज अ मदर कि नया न्यू कमर आया, चलो बच्चों ये पढ़ो, इससे आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन जैसे शोभा मैम ने बोला, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली आई एग्री विद शोभा मैम, फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जब ट्रेनिंग का एक माध्यम होगा तो हम बोलेंगे उसको, अच्छा आपने एफसीपी गाइड पढ़ा, नहीं पढ़ा, ओपन कीजिए। यू रिमेम्बर आवर ट्रेनिंग वाज डन लाइक दैट, डिड यू रीड दैट एफसीपी गाइड? नो, पेज नंबर। गीता, फिर भी सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होता, दैट यू विल एग्री। सिर्फ वो आधा घंटा 1 घंटा ट्रेनिंग, आफ्टर दैट द पर्सन हैज टू रीड दोस बुक। यस, और वो कॉन्टेम्पलेट, वो थिंकिंग करना जरूरी है, तभी होता है यार। True, but let us start with the training, na? That's what I'm trying to say. That's it. Feedback noted, ma'am, and definitely ITG or led by Arnab इस पर विचार करेंगे। He has a point. It can be used for training. It doesn't have to be used in schools, but
Why don't पहले we काम use करते it हैं for ना, यहाँ पे things? जो यंग मैम, यहाँ पे जो न्यू टीम मेंबर्स है खास करके, उनसे एक बार पूछ लेते हैं। उषा, सुदीपा, तनुश्री और बाकी लोग भी यहाँ पे जो लोग है भी ज्वाइन हुए। आप लोगों ने अभी तक कंटेंट देखा है क्या एसीपी का? डू यू नो व्हाट इज एसीपी? हम बार बार एसीपी बोल रहे हैं, डू यू नो? मनोज जी, आपने अभी तक देखा है क्या? जैसे मैं ऑफ हैंड कुछ नहीं सर, अभी तक एक्सप्लोरेशंस बता सकती हूँ, वो लता ठीक वाला। है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैम, शोभा मैम, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग बिफोर यू कंटिन्यू जो भी आपका टॉक है, एक ब्रीफ आउटलाइन दे दीजिए कि एसीपी में एग्जैक्टली है क्या? वही वाला एफसीपी है या कुछ और है? जस्ट गिव देम द न्यूकमर्स समथिंग ठीक हुक है, थिंग जिससे वो इंटरेस्टेड होगी, एक बार खोल के देख ही लेते हैं। ठीक है, ओके। तो एसीपी फर्स्ट ईयर में हम क्या, व्हाट डू वी टीच देम कि हमारे अंदर असीमित शक्ति, क्षमता, अच्छाई, जो आप एफसीपी में भी करवाते हो फर्स्ट मॉड्यूल में, अच्छाई का विशाल स्रोत है। और ये दिस लीड्स टू दिस, हेल्प्स अस मैनिफेस्ट ये सारे, इतने सारे पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है, लेकिन हम दिखाते हैं 6 यूनिवर्सल पॉसिबिलिटीज और 6 और 12 विशिष्ट संभावनाएं। विशिष्ट संभावनाएं में वी हैव फिजिकल पॉसिबिलिटीज और नॉलेज। इंटेलेक्चुअल मतलब फिजिकल, जो जैसे स्पोर्ट्स, गाना, सिंगिंग, ये सब, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ, ये सब होता है। और नॉलेज में इंटेलेक्चुअल पॉसिबिलिटीज बहुत सारे, बट दोज कम विद टैलेंट। और यूनिवर्सल पॉसिबिलिटीज तो आप अभी कर ही रहे हो, सो इन एफसीपी, सो यू नो अबाउट इट। तो ये है फर्स्ट ईयर। बच्चों को सिर्फ हम दिखाते हैं कि ये है, इतने सारे पॉसिबिलिटीज है, ऑल कम्स फ्रॉम सेइंग, हैविंग फेथ इन योरसेल्फ, ये मेरे अंदर में है वो असीमित शक्ति। Then in the second year is amazing because वो जितना भी आपने वो किया था ना, everything is done in so much detail. जो जैसे व्हाट इज रोशन रिटन फैंटास्टिक, हाँ, तो जैसे आत्मश्रद्धा में ओपननेस टू लर्निंग है ना? बीइंग ओपन टू लर्निंग है कि नहीं, याद है आपको? दैट इज वन थिंग। तो वो ओपननेस टू लर्निंग में ही देर आर सम 4-5 कैटेगरीज। ओपन टू लर्निंग मतलब यू कैन बी, यू नो, यू कैन बी जस्ट academic, आपको स्पोर्ट्स अच्छा नहीं लगता एंड यू स्टार्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस कि मुझे स्पोर्ट्स नहीं करना है। तो वी मेक चिल्ड्रन थिंक कि व्हाट, व्हाई इज द चाइल्ड थिंकिंग लाइक दिस, एंड मेनी चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग एंड सेइंग दैट एक्चुअली इट्स अ फियर ऑफ फेलियर। ये सब, ऑल दिस, व्हेन वी मेक देम से लाइक दिस, it's a great thing. It's not because sports is a bad thing. They need to recognize that there is a fear in them. वो confidence नहीं है उनमें, and they must try it. And if they try it, they can do it. तो वो है एक openness of learning में। और भी है कि हम अपनी comfort zone में रहते हैं और उसके बाहर हम जाना नहीं चाहते हैं। तो ओपननेस टू लर्निंग ईयर 1 में सिर्फ एक ही है, लेकिन ईयर 2 में जब आते हैं, देयर आर सो 4 or 5 कैटेगरीज। द एफसीपी में वी हैव टेकन दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट हर मॉड्यूल में, हर पॉसिबिलिटी में, it is every category has been subdivided to 4-5 more categories, and it's quite amazing how it has been put in different situations. जैसे मेरा फेवरेट तो है ट्रूथ सीकिंग का वो लता वाला, हाउ यू नो यू कैन लुक, व्हाट इज दैट रियलिटी, नो? ट्रूथ सीकिंग में वो क्या है लता वाला, लुकिंग फॉर रियलिटी इन वन सेल्फ। So you can, you know, you can hide reality from yourself. You can hide reality from others. You can, or you can face the truth, facing the truth. So itne sare possibilities, those possibilities have been subdivided into so many ways. Mera even Shraddha wala, Shraddha is a very difficult possibility to really understand, और ईयर 2 में ही जाके हम
especially the culture or tradition wala. When we do Rajat and Sake, that's when we really understand how we can, how understanding our own culture and tradition is so important for our own self-esteem. ये सब और द वे ओ रजत और साकेत आप देखोगे पुराना जो वो एफसी गाइड्स जो है उसमें जिस तरह दिखाया गया है क्वेश्चंस वो आप नया वाला में नहीं मिलेगा आपको. दैट्स व्हाट those questions are very important and they help you to think deeper. So second year में हम वही 6 universal possibilities हम बहुत ही deep तरीके से हम question करके contemplate करके हम समझते हैं. Third year में हम practices, different ways of practicing so that आपको पता ही है how we can awaken these possibilities in our day-to-day situations, वो है half of it. और वो pathways जो है वो भी है 6 pathways, वो हम करवाते हैं. तो everything, almost everything gets covered in FCP, लेकिन वही है year 2 का questioning तरीका थोड़ा सा हमने आत्मश्रद्धा में दिखाया है, लेकिन the difference is that वो पुराना वाला FCP guide, ACP guide हम नहीं यूज कर रहे हैं. At least for the trainer to understand the value, हमें स्कूल में यूज करने की जरूरत नहीं है. We don't have to give it to the teachers, but for our own understanding, if we read it, it will be very good for our own understanding. So year 2 content हम थोड़ा सा कर रहे हैं आत्मश्रद्धा में, लेकिन हम पुराना गाइड अगर यूज करें, we will have a better understanding. तो आप सुचिरा से बोरो कीजिए और वो पढ़िए, you will know, you will understand it better. That's all for about ACP. So ये this was my, जैसे स्वामी जी took us towards Ramakrishna and Mother. Similarly, this thing, whole thing about thinking, analyzing, this is what took me towards values. Values, possibilities, ये सब. Heroic, थोड़ा बहुत मैं थी, पहले ही होना ही पड़ता है जर्नलिज्म में, लेकिन you know, मैं आज ही सोच रही थी क्या वो 4 कैटेगरी में सब कुछ थी क्या. करेज तो होना ही है जर्नलिज्म में. फिर लेकिन हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस में दर्द, I may have felt fear. Choosing to obey, I've always reasoned out and chosen to obey. After thinking about it, I have kept my commitments. लेकिन honesty without thinking of the consequences, यहाँ पे मैं मुझे आदत था, अरे वो आया है, मुझे उससे अब आज मिलना नहीं है, बता दो मैं नहीं है, ऐसा excuses मैं बहुत करती थी. I don't want to talk to this person, I don't want to meet this person. ये लेकिन आजकल I don't do that. That is one thing. I say that देखो, I don't want to talk. I'm a little tied up. I say straight to the point. I don't send somebody else and say कह दो कि मैं नहीं हूँ. ये सब I'm a little more conscious thanks to it about. और expansion, I don't think मुझ में expansion था. अब है, मुझे पता नहीं, only others can tell me if मुझ में expansion है. मुझे लगता है थोड़ा सा हुआ. So and living in harmony also, work in progress है, बहुत काम करना है उसमें, लेकिन seeking perfection पहले ही हमारा काम में बहुत था, तो करना ही पड़ता था. वो था श्रद्धा. ये तो बिल्कुल I never, this whole concept यहाँ आके ही मुझे मैं Swami ji, I don't have the quote right now, but he talks about
how there is so much, there is no Shraddha in society. There is a certain cynicism. You know that? Have you read that quote of his? There is so much cynicism that is FDP में destroying है, society. Huh? FDP में है ना वो. Yeah, so I was also a happy cynic. It's after, I mean, to many of my friends, I'm probably very boring and goody now, but I give them their reasons. I can, that's again how my critical thinking, ACP structured thinking has helped me. I can give them reasons without feeling shy, without a lack of, without feeling, I have the confidence to do it. Yes, Tarshna. Have you ever thought of any more paradigm of inner possibilities apart from the 6? Have you ventured that side? Have you? No, while you're talking, I was just wondering, can I? You see, Bharat Muni, he talks of 8 rasas, but then Shanta rasa was discovered much later. So उससे मुझे कनेक्शन आया कि 6 possibilities तो इल्यूमिन बता रहा है. Could be some spiritual angle which we have not yet included for students. Could be there. Sharanagati could be a possibility. Shanta rasa can't be a possibility, no? If No, when you no. get these possibilities, One you minute. can. 1 second. I was drawing a parallel. That No, but it is a state of mind that you achieve after getting these possibilities. Am I? No, as per rasa theory, Shanta rasa is a rasa. But I cannot debate that. What I was saying that maybe there are so many inner possibilities which are interconnected. You see, heroic is connected to expansion, is connected to harmony. So maybe just randomly I'm speaking, Sharanagati, the art of letting go or surrender can be a inner possibility. Could be. I mean, Very good question, because that's exactly when I was thinking about, am I expanded? That is exactly what I was thinking of today or not. That expansion, I have expanded myself to a certain quite a bit in the way I talk, deal with people around me and my surroundings, with strangers, totally with people I don't know, etc. But I am not totally Shanta rasa is not there. So when I see others not behaving treating others well, I start getting a little agitated. Now, is that right? No, I don't think so. What do you think? I am working on my expansion and I'm trying to get expansion. Why should I expect other people? But it is. When I see others behaving unkindly, it makes me quite angry. What do you think? What should I do? Acceptance versus tolerance system मुझे याद है. Yes, living in harmony. Yes, you're right. That is a lot. I told you that's work in progress. That's my weakest, maybe. Yes, Tapan. नहीं, जब आप लोग ये बात कर रहे थे अचानक से मुझे मेरे थॉट अभी यही आ रहा है कि जो लोग अभी टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनके मन में क्या चल रहा है. अब मैं एक क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एफसीपी और एसीपी और एनी ऑफ दीज वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड दिस आइडिया कि आपका कॉन्टेम्पलेटिव माइंड काम कर रहा है कि नहीं, अब विचारशील है कि नहीं. अगर आपको एक लाइन या एक वर्ड या कुछ एक्सप्लोरेशन देख के आपको वो डिस्कवरी होगा तो वो तो रिजल्ट है. डिस्कवरी इज द प्रोसेस ऑफ सम सेल्फ एनालिसिस, सम कॉन्टेम्पलेशन, सम ऑब्जर्वेशन, और वो सारी चीजें जो साथ में लगती है. लेकिन मेजॉरिटी पीपल के साथ जो अभी भागादौड़ में इतने धर्म में बसे हुए हैं, मुंडेन लाइफस्टाइल और ये सब में प्रॉब्ली उतना समय नहीं है टू सिट डाउन, understand, think, and then reason it out, जैसे आपने जो मैम ने बोला. So can we just ask the rest of the team members, do they take out some time to do, how was the day, और ये basic सारी चीजें जो हम लोग start करते हैं like a beginner level, आप लोग करते हो क्या ऐसा? Team members, if you can just show your hands and say कितना time मिलता है आप लोगों के पास
खुद एनालाइज करने के लिए, दूसरों का एनालाइज करने में, बिहेवियर स्टडी करने में, यू गेट टाइम टीम मेंबर्स? क्योंकि एसीपी एफसीपी तो अल्टीमेटली उसी लेवल पे आप लोगों को ले जा रहे हैं ना, हमारा दिमाग तो उस लेवल पे ले जाने के लिए तैयार एक थिंकिंग टूल किट है, जैसे अर्नब ने बताया था, इट्स अ थिंकिंग टूल किट। तो थिंकिंग टूल किट तो उसके लिए काम आएगा जो थिंक करना चाह रहा है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन टीम मेंबर्स? कोई भी हैंडल्स मुझे बताया, न्यू मेंबर्स स्पेशली। रवि जी, सुदीपा। Arnab, I have a suggestion. You can make this part of your training program. You give them a homework or something where they have to think and come back the next day and see. Yes. Dilip Tawar, are you here? Dilip? Hello. Yes, sir. Sobha ma'am, I'll just introduce. Dilip was my first experiment. And now the last is Manoj and Rita. What I have been doing, and Dilip has exceptionally done that. Can you, Dilip, तुम बताओ ये स्प्रेडशीट में क्या कॉन्सेप्ट है, जरा बताओ तो क्यों दिया है? Okay, sir. एंड मनोज, उसके बाद तुम बताना तुम्हें भी क्या समझ आया, बोलो। Good evening, man. Good evening, everyone. वीडियो ऑन कर सकते हो क्या? इट्स यहाँ पे ओके, थोड़ा मेरी इंटरनेट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कंटिन्यू। Okay, sir. So, ma'am, basically जब मैं ट्रेनिंग के टाइम पे आया था तो नब सर ने मुझे कहा था कि तुम अपनी जो डिस्कवरी तुम करते जा रहे हो इन मॉड्यूल्स में, उनको एक स्प्रेडशीट बनाओ एंड उनमें लिखते जाओ कि तुमने जो एक्सप्लोरेशन 1 है उसमें क्या डिस्कवर किया। तो पहले टाइम पे कुछ और डिस्कवर हुआ फर्स्ट जब मैंने ट्राई किया, फिर अर्नब सर ने उसमें देखा उसे, उसको और थोड़ा सा क्लियरफाई करने का कहा कि और थोड़ा और एक्सप्लोर करो और थोड़ा कुछ सोचने का अलग वे में ट्राई करो। फिर सेकेंड डिस्कवरी उसी एक्सप्लोरेशन में मैंने की। ऐसे करते करते तीन चार बार करते करते हर एक एक्सप्लोरेशन का एक ऐसा डिस्कवरी जो मुझे मतलब जो मुझे बच्चों से निकलवाना था या मुझे बच्चों तक क्या पहुंचाना है या क्या उनसे अवेकन कराना है, ये पहले मुझे पता होना चाहिए, ताकि मैं उनसे सवाल जब जो हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, जो हम फैसिलिटेट करते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे बच्चों से क्या अवेकन कराना है। तो ये उसके लिए अर्नब सर मुझसे करा रहे थे। तो ये इस तरह से मैंने किया था कि पहला डिस्कवरी फिर दूसरा डिस्कवरी। So, thank you, Dilip. See, Shobha ma'am, when I see Lata Asha Nafisa, what am I discovering if I write? And Dilip, 100 explorations into 2-3 reiterations, he has done tremendous hard work diligently with discipline. So that was phenomenal. And now, Abhi, Manoj, yesterday only we were speaking. Manoj, aap batao, what is the value of doing this? Manoj? Meena? Shobham, I think it's clear. This manana, this homework, they are somehow doing it. It's God's grace, or I don't know. Manoj, you're not here? Yeah, Arnab, I feel if we encourage it, they will get into the practice. Because in our time, we used to talk to each other. We used to sit in groups and discuss, aisa kyun, no, why not like this? Choosing to obey, why not choosing to disobey? ये सब हम बात करते थे, and which is heroic. Choosing to disobey is heroic. So we got a clear, we discussed it, and so manana is very important, and this thing really helps you to sit quietly in a place and think, calm your thoughts, not get distracted, and focus on something. Any questions, anyone? Team members, कुछ पूछना है आप लोगों को? मैक्सिमम के वीडियोस ऑफ है तो पता नहीं चल रहा कौन है कौन तो नहीं है। Please go ahead and ask, raise your question. Yes, Roshan ji. Yeah, tell us about your experiences also, Roshan. Yes. जी शोभा जी, अभी आप केरला में हैं और हमारे मिशन के साथ और प्रोग्राम के साथ आप जुड़े हैं। तो अभी देखिए, आपका एसीपी के शायद 2-4-5 सालों के लिए, मुझे पता नहीं, अभी भी कुछ एसीपी कर रहे होंगे।
अभी भी आप मतलब अभी ज्यादा आप कैसे किस प्रोग्राम के साथ या एग्जैक्टली मिशन के साथ आपका एंगेजमेंट कैसे है, या पिछले समय में अच्छा था, या अभी भी आप एंगेज कर पाते हो, क्योंकि आप हमें पता नहीं वहाँ लोकल कौन सा आश्रम आपके नजदीक है, अगर आप बता देंगी तो। रोशन, मुझे बहुत सारे स्कूल्स दिए गए हैं। मेरे पास 3 अडॉप्टेड स्कूल्स है और 10 ऑब्जर्वेशन के लिए है। सो आई हैव प्लेंटी ऑफ वर्क फॉर दिस ईयर। मैं कैसे कर पाऊंगी मुझे पता नहीं, क्योंकि घर का भी देखना पड़ता है। Almost बचने वाले team members. Any further question? Shubha ma'am, your concluding thoughts, whatever, or Arnab, because it's such a relevant topic. Because ACP being the flagship program, as Viva team members, अगर हमें उसकी अच्छी खासी understanding कम से कम हो कि how the journey continued from ACP till FCP so far, I think it makes a lot of sense. So team members, Yes. please go ahead. So I feel that you all, all of you all can make your own effort at least, and even consult, like Geeta ma'am, I'm sure would be very willing to help you with your understanding. Arnab is there who would be there to help you. You can always clear your doubts, but take those kits and try to read. आपने गया एक स्कूल गया, एक मॉड्यूल खोला, कर लिया, उससे नहीं होता है. यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, रीड इट एंड थिंक अबाउट इट. ये ऐसा क्यों नहीं, आई अग्री, डोंट अग्री, वो इज देयर एनी, यू हैव टू थिंक डीपली and think of all the other possible, what could the children be thinking, ये भी आपके मन में आना. I think Avantika raised her hand, no? Somebody Yes, raised her. yes, Avantika ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening. Ma'am, I just wanted to add that as you said that while we were training, there were so many discussions that really Yes. helped. Now, still, like I am not very actively involved with, visiting schools because I'm not in the city. But I still now, after so much discussions and so much in-depth understanding, now when I think about something, I tend to think in ACP terms. So I think the newcomers or whoever's now, gradually in this field, they should go so deep in each topic that their thinking pattern is now in terms of ACP, not in terms of it's one chapter, there are two characters who are dealing with some problem. But you, think you are in that situation, and then what is happening, how you're thinking in those terms. And I think that if that concept comes to you, that becomes clear, then it will really help them in their personal lives as well as in whatever engagement they are in. So I think that needs a lot of discussion as a group, which we had the privilege of having. So we really did. We would just sit anywhere, draw 3-4 chairs and start discussing, in those old buildings. It was really very helpful. So I remember as Avantika said, Avantika, even now, even now it's benefiting her. She goes back to the same method. That's what I'm saying. It's the thinking, structured thinking process, what questions to ask yourself. I mean, not somebody else, yourself, asking yourself questions. That's so important. And I remember, Avantika ji, you were my classmates. Remember when Manjira was asking you question, you forgot, and I was prompting you. Remember or not? I don't know. Okay, so it was great fun. Definitely. Great fun in learning, and we were very lucky that I'm telling you, मेरे जैसा लग तो किसी के पास नहीं होगा. Year 3 का 6 key learnings महाराज जी के साथ हमने किया. And I feel so blessed. And at times I think, अरे ये 6 learnings इनको पता ही नहीं चलेगा. Okay, so that is what, makes me take that initiative in asking you the question, can we have some, some sessions for ACP sessions exclusively for the newcomers, Excellent. One day you should take 6 key learnings for all of us, because I think
I was no, I'm not joking. I'm not laughing. Seriously. Okay, so now that we have expressed our thoughts and feelings on maps हमने सुन लिया, how many team members are actually motivated to go to that, the training वाला जो हमारे पास लिंक है उसमें जाके ना कंटेंट को खोल के देखने के लिए? You people, लोग इंटरेस्टेड हैं? Okay, कई लोग हम सब दे रहे, so Shobha, it seems that the magic is done. People are showing interest now. So, Anna, why don't you do the honors? Close, आप थोड़ा vote of thanks दीजिए and Shobha मैम का conclusion. Anything. Seriously, it's a gold mine. Go through it. It's really a gold mine. It can change the way, as Avantika also mentioned, it can change the way you think. And it can, even if you're not with ACP, you're in some other part of the world, it will still help you. I wish to take 2 more minutes. Harish sir, आप है ना? नहीं, हरीश सर अभी कहीं पर चले गए हैं, तो वो नहीं है, मैं हूँ. अच्छा, ठीक है. मैं गीता मैम से अभी नहीं पूछना, उनका तो शुरू से ही उन्होंने मैजिक किया है. रमनन जी, Yes. can you just share your feelings about this topic? How did ACP impact you? Maybe 1 or 2 lines would suffice because we are ending, and it might inspire all of us actually. And I do not want to differentiate between ACP and FCP. And, Me too. That is a totally different topic. If you are asking me to explain, that will be different. But since you mentioned to talk about how the entry into I would say as a resource person to Ramakrishna Mission and the program content, how it has changed is as always, like our teachers tell me that when we are doing this to our students, sir, I also ask myself, am I being heroic? Am I expanding myself? So that thought always comes to me whenever I am either trying to be a person to take a demo in the beginning when Manjira was there, when I tried to do the demo as a trainee, and even now nearly the 10th year, whenever I conduct it in the adopted classes, or when I'm sitting there as an observer, of course, these things goes into me to self-introspect. What am I? Where am I? Am I doing this? That exploration, when we talk about accidents, what happens? Sometimes I walk past, it may not be a major accident, but still. So I try to reflect, we see, but I'm not doing anything, I'm just walking past. So this is what I think. And also I remember, which I tell in the training sessions, that Swami Shantatmananda ji told us, when we came for training, the newly recruited young resource persons here, like that, when I came to Delhi in the year 2017 or 18, so Swamiji said, unless you awaken yourself as a resource person, you will not be able to awaken the teachers in your training. And he said, unless the teachers awaken themselves, they will not be able to awaken the students in their classroom. So these things I try to remember as a resource person. I don't know how far I want to put a mark on that in my awakening journey. It's a journey. So, but this is what it goes, a self-introspection. Thank you. Thank you, Ramanan sir. It appears that you are experiencing this work and this program as a blessing, because through the work, it is actually directly impacting us. So with this beautiful thought, Sobha ma'am, we can end by praying to Swamiji and then Mother, if you allow. Om Namah Shri Atirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine
जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे त्वयो श्रुत्वा प्रणमामि. Thank you, Shobha ma'am. Shobha ma'am. Thank you, Shobha ma'am. Thank you so much, Sobha ji. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. It was wonderful. Yes. Original, coming from your heart. Thank you so much.